Elements after lanthanum are known as lanthanides. Okay, elements after lanthanum is known as lanthanide, and then the elements after actinium, it is known as actinides. So there are two main categories. यहाँ पे कहीं पे होगा. They have only one stable. Chemistry of actinides, है ना? Actinium, lanthanides and actinides. Now, in lanthanides, please see the electronic configuration. In electronic configuration, it has a common 6s2 configuration, but it will have variable 4f level. That means 4f subshell will be filled in the lanthanides. 4f can go from 1 to 14 with increasing atomic number. Now, then there is one important property that is of atomic and ionic sizes. Jitna expected hota hai decrease in size, since we go from left to right, there will be a decrease in size since the atomic number is increasing and we are filling the electrons in the same shell. That is why what is going to happen, what should happen, there should be a decrease in size, but the decrease in size is more than expected. And it is more than expected because of lanthanide contraction. It is because of lanthanide contraction. Why does lanthanide contraction occurs? Lanthanide contraction ka matlab kya hota hai? It is the consequence. There will be a decrease in atomic radii that will be more than expected. And that decrease is because of the shielding of one 4f electron by another is less than one d electron by another. It increases the nuclear charge along the series. And if there is an increase in the nuclear charge, the nucleus is going to attract the outermost electron more effectively. And when it is attracting the outermost electron more effectively, there will be shrinking in size, and that shrinking is known as lanthanide contraction. Okay. Now, this part is important, which talks about the consequence of lanthanide contraction. The consequence of lanthanide contraction. Now, next important topic is the oxidation states. Okay, in oxidation state, you have to remember that +3 is the stable oxidation state and the common oxidation state. Okay, agar aapke paas, if you have any element in the lanthanides which is in +4 oxidation state, so it will readily convert itself to +3. So that means what it is getting, it is getting reduced. That is why this +4 one will all be oxidizing agent. है ना? ये खुद ब खुद क्या हो रहा है? Reduce हो रहे हैं. That is why these will be oxidizing agent. Similarly, you will have +2 oxidation state of lanthanides. They will readily convert it themselves to +3 oxidation state. Now, +2 to +3, it is getting oxidized. That is why all the +2 will be, all the lanthanides with +2 oxidation state, these are going to be reducing agent. Okay. Please remember this, and that information is present here. They will ask you about, talk about the oxidizing nature or reducing nature of cerium +4. So when you have, as you see +4, it is going to be what? It is going to be oxidizing agent. When you have +4 oxidation state, okay, it will be oxidizing agent. As you can see, it is written these parts. Yeah. C +4 is favored as it has noble gas configuration, but it is a strong oxidant, reverting to the common +3 oxidation state. Okay. So C +4, it is going to be what? It is going to be a good oxidizing agent. Then you have similar thing with PR, ND, TB, and DY also exhibit +4 oxidation state, but only in oxides. EU2+ is formed by losing. All these chapters are over. This is the last part that we are doing. In the next class, we will be doing solution chapters. It's formed by losing 2s electron. That is another information. However, EU2+ is a strong reducing agent. Okay? So if you have anything in the +2 oxidation state, that will be a reducing agent. Anything in the +4 oxidation state, that will be an oxidizing agent. Okay? Please remember this. No, Muhammad Umar, this is not a revision class. Next, you have the electronic configuration. These highlighted ones, please इनको देख लीजिएगा. They have exceptional electronic configuration. They have 5D1. ठीक है, 5D1, 5D1. और कहीं पे अभी आपके पास 5D में electrons नहीं आते, but in cerium, gadolinium and lutetium, you are going to have 5D electrons. ये होता है इस वजह से, because as you
move up in the energy level, the first and the second energy level, they are going to have a significant difference दोनों के अंदर. Second and third will have lower difference. Third and fourth will have even lesser difference. Fourth and fifth will have even lesser difference. And as you move up in the energy levels, the difference between the energy levels are going to shrink. Okay, they are going to shrink. That is why what happens there, some electrons they get into the 5d subshell. Okay. Now, next is the general characteristic. In general characteristic, you have to first of all see the reactions mainly. Okay. Here you will see some general properties. Many trivalent lanthanide ions are colored in both solid state and aqueous state. This is color of these ions may be attributed to the presence of F electron. Okay. This is important. Why do they show color? They will show color because of the presence of F electron. When you have F0 or if you have F14, these are going to be paramagnetic. Okay, these are going to be paramagnetic. Now, next is the reactions of lanthanide. Lanthanide, they generally show reactions similar to that of aluminium. That is why if you will see the compounds, if you react lanthanum with oxygen, then what compound are you going to make? Since lanthanum is going to lanthanides, all the lanthanides are going to react as aluminium. They will have valency of 3. Oxygen will have valency of 2. Valency of 2. If you are going to cross multiply this, you are going to get Ln2O3. Okay, so this type of compound is formed. And similarly, if you see with sulfur also have the oxidation state or the valency of 2, you will get Ln2S3. If you see lanthanum and nitrogen, both will have oxidation state, valency of 3 and 3. If you cross multiply, you will get Ln3 and 3. Since both of them are having same coefficients, you can divide by 3 on both sides and you will get Ln. Okay. So this is the nitride of lanthanum. Then you have hydroxide, which is also LnOH whole thrice. Important thing about the carbide is that carbide can be formed in Ln whole thrice C, Ln whole twice C3 and LnC2. These are the different types of carbide that is formed by lanthanides. But important part जो है ना वो क्या है आपके पास, इसको आप general जो आपके पास है lanthanides behaves majorly as aluminium. ठीक है, majorly as aluminium. And since lanthanum is behaving as aluminium, and it is a metal, it is going to liberate hydrogen with acid. Okay, lanthanides are also going to be active metal which liberate hydrogen on reaction with acids. Now, this is the same thing. जो यहाँ पे ये reaction लिखा हुआ है, it is the same thing. तो आप लोग बस एक चीज याद रखिएगा कि reaction किसकी तरह होता है, aluminium की तरह होता है. Now, next is important alloy that is known as mixed metal. Mixed metal, it consists of lanthanide metal, 95%, iron 5%, and traces of sulfur, calcium, carbon, and aluminium. Okay, so this is important. ये alloy याद कर लीजिएगा. Mixed metal. In the short notes, you can write about mixed metal. Okay, this is about all about your lanthanides. ठीक है, कि lanthanides में क्या क्या होता है. Important points में lanthanide में आप इसको please याद करके रखिएगा. Reducing agent वाला जो part है and oxidizing agent वाला part. This is going to be important. Okay. Then next important thing is the reactions of lanthanide. Lanthanide, they majorly react as aluminium. Okay. Next you have actinides. Actinides में you will remember you have to class मतलब जब exam होगा उससे एक दिन पहले आप इनकी electronic configuration देख लीजिएगा. As you can see, all of these are going to have D1, 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 right, and D1 electrons. Thorium is important because it has D2 electrons. Okay, thorium is important because it has 2 electrons in the D subshell. Now, in actinides, we generally speaking क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे 5f electrons को भरा जाता है. We are filling the electron configuration lanthanide is of difference. This is lanthanide. You're asking about lanthanides, Nabil? Yes, sir. Okay, you have this. ये PDF आप लोग को ग्रुप में मिला होगा ना? You have this PDF, right? Is Nabil? Yes, Nabil.
नो नहीं है तो फिर से हम भेज देंगे, आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, आई विल फॉरवर्ड टू। नाउ मूविंग ऑन टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज ऑब्वियस कि आपके पास जो F0 होंगे, F7 होंगे और F14 होंगे, these are going to be more stable, these are going to be more stable. Okay, now इसमें आप ना इन दोनों का प्लीज याद रखिएगा, the configuration of AM and CM, these are RN 5F7 and 7S2, and for Curium it is going to be 5F7 6D1 7S2. Okay, this is because of the relative stability of F7, because of the relative stability of F7. Now since it is given अलग से बिल्कुल NCERT के टेक्स्ट में, that is why this become important. Which one are these? These are Americum and Curium. This is also 5F7. Curium is also 5F7. Now, moving on to the oxidation state. In oxidation state, generally you can say that the actinides resemble lanthanides in having more compounds in +3 state than in +4 state. So actinides में भी क्या होंगे आपके पास? You will have more of +3 state. However, +3 and +4 ions tend to hydrolyze because of the distribution of oxidation state among the actinide is so uneven and so different for the former and later element. It is unsatisfactory to review their chemistry in terms of oxidation state. ठीक है? तो generally oxidation state actinides के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती because of insufficient data. ठीक है, केमिस्ट्री उतनी मौजूद नहीं है. Also, most of the actinides, they are not even 1 nanogram in this whole universe. Not whole universe, my bad. In this whole, like आपके पास 1 nanogram भी नहीं है. लोगों ने उस टाइम when you were having the Cold War ना, तो Cold War के टाइम में USSR and USA, they were fighting with each other. Not in the sense that there was a real war, but they were fighting कि स्पेस में पहले कौन जाएगा, किसके पास इस बीमारी का इलाज है, किसके पास ज्यादा कंपाउंड उसके नाम में है. Okay, so what happened eventually that USSR and USA, they started investing too much money in this field of getting new elements. तो ये सारे जो एलिमेंट है ना, आफ्टर 100 मोस्ट ऑफ द ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स है ना, ये सारे के सारे नए एलिमेंट है. एंड दीज आर व्हाट, दीज आर कंप्लीटली मैन मेड एलिमेंट्स एंड दीज आर नॉट प्रेजेंट इवन लाइक 1 नैनोग्राम 2 नैनोग्राम के अमाउंट में बना. उन लोगों ने रिपोर्ट कर दिया कि नया एलिमेंट हम बना के लाए हैं और वो उनको क्रेडिट मिल गया. इसी वजह से IUPAC ने क्या किया था, एंड ऑल्सो USSR एंड USA, they started to, I think, they started to fight also कि for I think example कोई शायद लॉरेंसियम था ऐसा मेटल, या फिर आपके पास कुछ फर्मियम या इंस्टेंटिनियम कुछ ऐसा मेटल था, which was said that USSR बोल रहा था कि हमने ही बनाया, USA बोल रहा था कि हमने ही बनाया. Then IUPAC said that कि कोई नहीं बनाया, अब हम लोग क्या यूज करेंगे. Until and unless there will be a setting, there will be a meeting, there will be a voting about the name of the element, we will use that un, nil, by, try. 100 के बाद के जो एलिमेंट का जो नेमिंग होता है ना, तो उसके लिए उन लोगों ने फिर ये कन्वेंशन निकाला. बट आफ्टर USSR, after the fall of USSR, USA took on over the world, and that is why most of the elements, as you can see, these are completely favored towards the USA, because in the meetings also of IUPAC, USA was favored. तो यहाँ पे आप देखिएगा सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है, that is mendelevium 101, which can be credited to USSR and not to USA. बट बाकी सारी चीजें जो भी है ना, इट इज कैलिफोर्निया में, मतलब शहर के नाम पे दे दिया. बर्कली इज देयर, तो बर्कली. ओके, लॉरेंसियम इज देयर. सो ऑल ऑफ दीज आर फेवर्ड टुवर्ड्स USA. आफ्टर यूरेनियम, ये याद रखिएगा, बहुत मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दे आर नॉट प्रेजेंट इवन 1 नैनोग्राम. उसकी केमिस्ट्री के बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं पता है किसी को. दे एग्जिस्ट इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज USSR और USA लड़ाई कर रहे थे. दैट्स इट. एंड एज यू कैन सी हियर, देन यू हैव नेक्स्ट इज, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपका, general characteristic with comparison to lanthanides. Actinides और lanthanide में जो comparison है, that is important. Okay, so please see. सबसे पहले एक behavior तो आपको यहाँ पे पता चला कि they also exist in +3 state as that of lanthanides, और +4 में बहुत ही कम इसके compounds मिलते हैं. ठीक है, सबसे पहले आता है आपके पास ये similarity. Then लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जिस तरह से होता है ना 4f में इलेक्ट्रॉन डालने की वजह से, देयर इज अ सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन दैट इज नोन एज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन.
Okay. Lanthanide and actinide contraction, they have extended effects on the size. Just a second. Early actinide resemble lanthanides in showing close similarity with each other and in gradual variation in properties, which do not entail changes in oxidation state. The lanthanide and actinide contraction have extended effects on the sizes and therefore the properties of the elements succeeding them in their respective period. ठीक है, तो ये important. This line is important from here. The lanthanide यहाँ तक, ठीक है. इसमें आपको क्या करें? We are comparing the actinides with lanthanides. One important point is here regarding the ionization enthalpy. The ionization enthalpies of early actinides, though not accurately known, but are lower than that of early lanthanides. ठीक है? Why does this happen? इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए. ठीक है? Generally, what do we say? I hope all of you will agree that 5f electrons have less shielding power. Correct? Yes or no? Please tell me, guys. All of you agree with this? Yes, sir. All of you agree? Then there is another statement. I can say 5f electron are more shielded than 4f electrons. कितने लोगों को ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहे हैं? थोड़ा हाथ रेस कीजिएगा. लग सकते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, इस वजह से हम पूछ रहे हैं. ठीक है ना, इसमें कुछ ये नहीं है. On the first reading, they may seem contradictory. नबील को contradictory लग रहा है. What about others? Hishma, Khalid, Saif, Sara. Okay. Khalid, आपको contradictory नहीं लग रहा है? You can lower your hand, guys. Khalid, आपको contradictory नहीं लग रहा है? Question, sir, I got disconnected. अच्छा. Can you see those statements I have written? 5f Yes. electron have less shielding power. दूसरा लिखा हमने 5f electrons are more shielded than 4f electron. ये मतलब आपको contradictory लग रहा है या फिर you can say that both of these statements make sense? Sir, contradictory लग रहा है. Contradictory लग रहा है. ठीक है. ठीक है, हम तो इसको समझाने की कोशिश करते हैं. जब हम ये कहते हैं ना, when I say 5f electron have less shielding power, then I am saying 5f electron की कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि 5f का इफेक्ट क्या, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन ऑन अदर्स. 5 इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट ऑन अदर्स. ठीक है, कि 5f इलेक्ट्रॉन कितने अच्छे से शील्ड कर रहा है. तो शील्ड किसको शील्ड कर रहा है? यानी कि इट इज एक्टिंग एज अ शील्ड. तो शील्ड करेगा किसी और को, है ना. तो इसकी इफेक्ट क्या है? ये अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहा है. देन व्हेन आई से 5f इलेक्ट्रॉन्स आर मोर शील्डेड, व्हेन आई से दैट इट इज मोर शील्डेड, यानी कि 5f इलेक्ट्रॉन क्या है. अब इसके बारे में हम लोग बता रहे हैं कि इसको जिसने भी शील्ड किया हुआ है, कैसे शील्ड किया हुआ, अच्छे से शील्ड किया हुआ या खराब से शील्ड किया हुआ. ठीक है, अब एक बात बताइए. 1 2 3 4 and 5. ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि you will have the 4f इलेक्ट्रॉन यहाँ पे and you will have the 5f इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, है ना. So 1 2 3 4 and 5. अब ये बताइए, you have more electrons before 4f या before 5f? You have more electrons before 4f या 5f? 4f को देखिए 3 तक शील्ड किए हुए हैं लोग, राइट. बट 5f को कहां तक शील्ड किया हुआ है लोगों ने? 4th शेल तक शील्ड किया हुआ है. yes or no, please tell me. Yes, sir. Now both of these statements, they make sense, yes or no? Yes, Sara, Khalid, Nabil, what do you think? Yes, sir. Make sense कर रहा है?
ठीक है ना, कंफर्टेबल Yes, विद बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स ना? yes, sir. ठीक है, ओके Yes, sir. ओके। व्हाट अबाउट यू सारा? Yes, sir. ठीक है। Now the ionization enthalpy is less and they are saying this is, इन्होंने NCERT ने बहुत ही आसानी से लिखा, this is quite reasonable since it is to be expected when 5f orbitals are beginning to be occupied, they will penetrate less into the inner core electrons. The 5 electrons will therefore be more effectively shielded from the nuclear charge than the 4f electron, ठीक है, of the corresponding lanthanide. So यहाँ पे अब ये बात कर रहे हैं कि 5f को जो भी शील्ड कर रहे हैं वो किस हद तक शील्ड कर रहे हैं, एंड 4f को जो लोग शील्ड कर रहे हैं, the electrons which are shielding 4f electron, उनकी effectivity क्या है? तो वहां पे we can completely agree that 5f are going to be shielded more effectively because they have more number of electrons in the core shell. अगर हम 5f की बात करें तो उसके core shell में ज्यादा electrons होंगे and not in the 4f orbitals. Okay, this is one of the important point कि ionization enthalpy it is lower than lanthanides. Okay, it is going to be lower than lanthanides. So majorly आपके पास यही है इसमें F block elements में you have lanthanides and actinides. Lanthanides में आप लोग ध्यान रखिएगा किस चीज के बारे में, आप लोग ध्यान रखिएगा उस चीज के बारे में कि reducing agent and oxidizing agent के बारे में, है ना? उसके बाद उसमें और आपको lanthanides में क्या याद रखना, the reaction जो भी वहां पे हो रहा है. Okay, you have to also remember about the reactions. And they can ask you, अगर आपको कुछ भी ना lanthanide के किसी एलिमेंट के बारे में पूछा जाए ना कि the white is stable, स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जाए तो आप उसमें सीधा दिखा दीजिएगा कि either it will have F0 or it will have F7 or it will have F14 का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तभी कोई चीज स्टेबल हो सकती है, प्लीज ध्यान दीजिएगा इसके बारे में. बट प्लीज रिमेंबर ऑल्सो वन मोर थिंग कि ऐसा नहीं है इफ यू हैव F7 तो ये +3 होगा या फिर आपके पास +4 होगा. अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में you have cerium, okay, cerium +4, cerium +4 की अगर हम बात करें it is going to be it should be having noble gas configuration. cerium कहाँ पे देखिए, I think it should be in the starting only. हाँ, तो see cerium here, cerium में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? you have 4 electrons in the outermost shell, है ना, 4f1 5d1 6s2, ये चारों के चारों आपने निकाल दिया तो फिर आपके पास क्या बन जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. they have noble gas configuration but still वो वापस से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है. ओके, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड इज +3, +4 हो चाहे +2 हो, सारे के सारे कहाँ जाएंगे, +3 में ही जाएंगे. सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए, सिमिलरली ytterbium2+ which has 4f14 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, 4f14 कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन फिर भी ये क्या है, इट इज अ रिडक्टेड, दैट मींस इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ये अभी भी क्या है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट है, +2 से +3 में ही जाना है इसको, even though it has 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, चलिए तो आपके पास F ब्लॉक एलिमेंट्स में यही है. अच्छा, एक पॉइंट आप लोग ना प्लीज लिख लीजिएगा जरा, आई डोंट नो वेदर आई wrote this or not. The color in KMnO4 is due to ligand to metal चार्ज ट्रांसफर. ठीक है, KMnO4 में कलर इस वजह से होता है. Sir, in oxides and oxyanions are metals. At last paragraph, you explained, sir, the one before potassium dichromate part. Mm-hmm.
Yes, tell me. Sir, here it is saying in the second line, it's saying V2O5 gives VO4 3 minus and VO2 plus salts. But in the second to last line, it's showing VO4 3 minus and VO4 plus salt. Sir, so which one is the salt which it forms, sir? VO25 reacts with alkalis as well as acids to give VO4 3 negative and VO4 positive. Is amphoteric VO. It is in vanadium. There are gradual change from the basic to less basic V2O5. So it gives CA. It's however amphoteric. Though mainly acidic, it gives Sir, VO4 the negative. one line above that, sir. Like the basic one. The second line of this V2O5 is however amphoteric and gives VO4 3 minus and VO2 plus salt. Oh, okay, fine. Got it. यहाँ पे एक second. Let us calculate the oxidation state. VO4 3 negative will be. What is the oxidation state here for VO4 3 negative? +5. +5 होगा ना? Yes or no? And when you have VO2 positive, VO2 positive में कितना हो जाएगा? What will be the oxidation state for vanadium here? +5, sir. +5. अच्छा, it is. अच्छा, wait a second. देखिए V2O5 को अगर आप ना, when you react V2O5 with acid, then आपको ये दोनों मिलेंगे. VO4 3 negative and you will get VO2 positive. When you will react it with alkali, V2O5 reacts with alkalis as well as, so यहाँ पे उन्होंने as well as लिख लिया है. This is strange. VO. Two positive and 4 positive. 4 positive में इसके पास oxidation state तो +5 है यहाँ पे. Here also it is +5. आप ये लिख लीजिए. V2O5 अब जब इसको एसिड के साथ रिएक्ट कीजिएगा, then it is going to give you VO2 positive. VO2 positive देगा. And जब आप इसको बेस के साथ रिएक्ट कीजिएगा, तो ये आपको VO4 3 negative देगा. Okay, just let me confirm this.
एसिड के साथ और बेस के साथ में नेगेटिव, एसिड के साथ पॉजिटिव। इसमें आप दोनों लिख लीजिएगा, when it reacts with acid ना, to be safe, write both VO2 positive and VO4 positive salts। बेस के साथ तो बस यही दे रहा है, एसिड के साथ आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे दिया ना, तो दोनों को लिख लीजिएगा, VO2 पॉजिटिव एंड VO4 पॉजिटिव। VO4 पॉजिटिव में इसका ऑक्सीडेशन से लेकिन चेंज हो जा रहा है। VO4 पॉजिटिव में इट विल बी हाउ मच, 4 और 8। VO4 पॉजिटिव नहीं होना चाहिए ना, VO4 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट +9 हो जाएगा ना। इसको नहीं लिखिए यार, ये नहीं है, ये टाइप ऑफ एनसी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैनेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज गोइंग टू बी +9, करेक्ट है ना, +9 होगा ना। यहाँ पे 5 है, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9 तो हो नहीं सकता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +9 नहीं हो सकता वैनेडियम का। जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, तो यहाँ पे किसका होता है, मैंगनीज का होता है, दैट इज ऑल्सो +7, तो वैनेडियम का हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये वो टाइपो है वहां पे, ठीक है। एसिड के साथ रिएक्ट किया तो VO2 पॉजिटिव, बेस के साथ रिएक्ट किया तो VO4 3 नेगेटिव। ओके, क्लियर है नबील? Yes, sir. थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। ओके, हम एक दो बार इसमें देख लेंगे, एक दो एनसीईआरटी के और एक दो एडिशन में देख लेंगे, पुराने एडिशंस में। आई होप ये मिस्टेक पुराने में नहीं हो, ठीक है। ठीक है, आई होप इट मेक सेंस आल्सो कि +9 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता है इसका, वैनेडियम का, है ना। वैनेडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैनेडियम का देखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। क्यों? इट इज हैविंग +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों? क्योंकि वैनेडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर वैनेडियम के पास? सक पी वी 21, 22 एंड 23, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 ही हो सकता है, +9 तो वो जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो एकदम मान लीजिए उसको कि वो टाइपो है, वहां पे VO4 नहीं होना चाहिए था, VO2 पॉजिटिव होना चाहिए था, ठीक है। उसको नोट डाउन कर लीजिए। एसिड के साथ VO2 पॉजिटिव और बेस के साथ VO4 3 नेगेटिव। दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग जब आइएगा ना, तो आप लोग प्रैक्टिकल्स के लिए थोड़ा तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में जब आइएगा, यू रिवाइज द चैप्टर सोल्यूशन चैप्टर, ओके। सोल्यूशन चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा। सोल्यूशन चैप्टर से ही हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यूज तो नहीं, इन जनरल हम बोल रहे हैं, एमसीक्यू करेंगे, assertion and reason टाइप क्वेश्चन करेंगे, एंड देन वी विल डू सम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे। आपके जो एग्जाम हुए थे, टेस्ट हुआ था उस मॉक में, उसमें भी न्यूमेरिकल्स था। न्यूमेरिकल्स में बच्चे जनरली वो प्रैक्टिस की आपकी जरूरत है ना, कंसेप्चुअल वहां पे हम कुछ कुछ प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। एक दो उसमें न्यूमेरिकल भी होगा जहाँ पे कुछ कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज हो रहा होगा, ठीक है। सोल्यूशन लेके, सोल्यूशन का हम लोग रिविजन करेंगे। रिविजन इन द सेंस हम ये नहीं करेंगे कि रॉल्स लॉ ये होता है, हेनरीज लॉ ये होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेबर प्रेशर